infrastructures. क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा है कि इसमें मतलब ये मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है जिसमें मैंने ये बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स कैन एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर स्टोरेज databases network softwares and analytics over the internet instead of using local computer on premise infrastructure. Cloud computing are typically offered on pay as you go model, meaning users only pay for resources they consume. So, like I said, that cloud computing is a technology that allows users to access computing resources such as servers, storage, databases, networking, software and ये means ऐसा है कि let me explain you in detail. थोड़ा सा explain कर देता हूँ detail में. Means ऐसा है कि suppose इसका font size तो cloud computing. Basically, cloud computing is a technology is a technology that allows users to access computing resources that allows users to access computing resources such as one which we can say such as databases, net databases. Second, networks. Third one, networks, softwares, and analyzes over internet
instead of using instead of using local computers or premise infrastructures or premise infra infrastructures. So basically on this thing we have understand that cloud computing is a technology that allows users to access computing resources such as database, networks, softwares, and analyzes over the internet instead of using local computers or premise infrastructures. So let's see what cloud computing or like services are typically offered as a pay as you go model. So on this thing we can say that we can say cloud services are typically are typically offered on a pay as you go. This is the thing where we can say that cloud services are typically offered as pay as you go. So meaning users only pay for resources they want. It means that users can only pay for the resources that they want. And it also provides development of platforms, storages, softwares, and databases online. So, like it supports multiple service models and deployment models. So, in this thing, I'm going to write this thing off. Like we can say, this thing that it provides development platforms, storages, softwares, and databases online. So it provides development platforms, storage softwares and databases online. So this is all we can say about cloud computing. And it also supports multiple multiple services models. And we can also say that it also deploy it also deploy also deploy like it also deploy wait a second.
So it also like what we can say is that and databases online multiple services models and so we can say that cloud computing can like support multiple services model and it also deploy models also. So it deploys some kind of we can say like it deploy some specific models and it with that it also offers scalability scalability and it also deploys scalability, flexibility, security, and reduce cost. Like we can say, flexibility, security, and reduced cost. Reduce cost on this thing. So, like I said it, like I said in this thing, that provides development platform storage, softwares and databases online. It supports multiple services model and deploy models and offers scalability, flexibility and reduced cost and eliminates the need for direct infrastructure management. Like there is no need, sorry, there is no need in direct infra, infra, infrastructures, infrastructures and management. This thing we can say there is no need, and it also eliminates the need for direct infrastructure and management. Coming to the next point, now it's time that we should understand that what else we can just learn on this thing. So first of all, there are some applications of cloud computing. So in this thing we can discuss like some applications, some applications of cloud computing. Applications of cloud computing. I know there is some spelling errors or something, but still we can just ignore all these things and we can just, you know, like we can say that we can just ignore all these things. We can just go on applications of cloud computing. So, what are the applications of cloud computing? First one is data storage. First one is data storage and backup. So, data storage and backup. This is the applications of cloud computing. And second one is application development. Application development. And third one is disaster disaster recovery. Third one is disaster recovery, and fourth one is big data data processing.
and fifth one is AI and machine learning. So these are the applications of cloud computing, which is data storage, applications of development and disaster recovery and big data processing and AI machine learning. So these all are the applications of cloud computing. Next, we are going to, we are going to just install all this. इधर का ही नहीं हो रहा है. Okay, so now it's time that we should now go on the now it's time that we should go on to the next thing, which is the दूसरी चीज़ में हम जाएंगे. Like I'm getting requests that there are some people who are just don't understand English, so थोड़ा हिंदी में बात करते हैं. अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमने ये तो देख लिया था. हमने थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर्स, अभी हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं. तो सबसे पहली बात ये है कि हम ये जानना चाह रहे थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली क्या होता है. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एक मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म हाउ ऑर्गेनाइजेशंस build, deploy and scale technologies. Instead of owning physical infrastructure, users access computing resources over internet on demand. इसका मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रांसफ़र करता है कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बिल्ड होते हैं. लाइक इट सेज कि हाउ, ये बताता है कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर बिल्ड, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बिल्ड होते हैं और फिर उन्हें डिप्लॉय कैसे किया जाता है. डिप्लॉय कैसे किया जाता है मतलब उनको प्लेटफॉर्म में कैसे लाया जाता है, और साथ ही साथ उनका स्केल इन टेक्नोलॉजीज़ और उनकी स्केल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ कैसे इम्प्रूव होती है. इंस्टेड ऑफ ओनिंग फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उनका फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो ओन करने के ज़रिए यूज़र्स एक्सेस कंप्यूटर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट ऑन डिमांड. मतलब यूज़र्स क्या है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करें ओवर द इंटरनेट ऑन डिमांड. मतलब ये है कि उनके ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम इंटरनेट फॉर्मेट में ले जाए तो कैसा रहेगा. तो क्या है कि यूज़र्स
can access computing resources, can access computing resources or computing resources, can access computing resources over internet in demand. मतलब ऐसा है कि यूज़र्स कैन एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर इंटरनेट इन डिमांड। मतलब यूज़र्स को क्या डिमांड रहता है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब अपना ऑनलाइन शो करें और अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि वी कैन एलिमिनेट द नीड for physical सर्वर्स। मतलब सर्वर्स को हम फिज़िकली एलिमिनेट करके और वी कैन ऑल्सो एंड वी कैन अफोर्ड अपफ्रंट हार्डवेयर कॉस्ट और we can eliminate the need for physical servers and upfront hardware cost। मतलब ये है कि हम हार्डवेयर कॉस्ट को अपफ्रंट कर सकते हैं, मतलब हार्डवेयर के जितने भी एक्सपेंसेस है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और इनेबल्स ऑन डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज। मतलब ऐसा है कि हम इनेबल कर सकते हैं ऑन डिमांड, वी कैन इनेबल ऑन डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज। मतलब ऐसा है कि हम ऑन डिमांड एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटिंग पावर एंड उसके स्टोरेज को हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये है कि वी कैन, मैं लिख देता हूँ, वी कैन इनेबल ऑन डिमांड एक्सेस to computing power and storage, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये सपोर्ट करता है स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट और कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है। सो ये हमने इतना पढ़ा है कि एलिमिनेट करता है नीड फॉर फिजिकल सर्वर्स और इनेबल करता है डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज और सपोर्ट करता है स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसका एक और वो है, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स दैट क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्व्स। मतलब ऐसा है कि हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग को के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कैसे होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है। मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर देता हूँ, मुझे फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज ऐसा कर देता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब देख के अच्छा लगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स that cloud computing
solves. Before the cloud, the companies want to launch a website or an application that follows slow and expensive process. बिफोर भी मतलब कंपनीज जब सबसे पहले क्लाउड को डिप्लॉय करने के लिए हम कंपनी से चाहते हैं दैट कंपनी कंपनी कैन लॉन्च अ वेबसाइट कैन लॉन्च अ वेबसाइट और एन एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस मतलब ये है कि कंपनी से हम ये चाहते हैं कि कंपनी अपनी वेबसाइट को लॉन्च करे और अपने एप्लीकेशंस को इट हैड टू फॉलो मतलब ऐसा है कि उसको फॉलो करना चाहिए स्लो एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। मतलब ये है कि कंपनी को स्लो और एक्सपेंसिव प्रोसेस करना चाहिए बट ये है कि द ओल्ड वे ऑन प्रेमाइसेस कंपनी हैड टू परचेज मतलब कंपनी हैड टू परचेज फिजिकल सर्वर्स स्टोरेज डिवाइसेस एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स मींस कंपनी को परचेज करना होगा फिजिकल सर्वर्स और स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें डाटा स्टोर होता है और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स जिसमें नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स आते हैं वो सब कंपनी को देखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है ये भी तो हो सकता है तो अभी दूसरे इसमें ये चलते हैं लेट्स टॉक अबाउट दी दी ओल्ड वे दी ओल्ड वे ऑन premises the old way on premises so company had to purchase so the thing is that company had to purchase like the physical ph physical servers storage devices and networking equipments networking equipments they have to purchase and this required a large upfront investment known as capital expenditure so in this thing इसमें क्या होता है कि कंपनीज को ये सब इस्टेब्लिश करने के लिए एक लार्ज अपफ्रंट investment known as capital expenditure
कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात ये होती है कि पीक यूसेज हैड टू बी इस्टेब्लिश इन एडवांस। मतलब ऐसा है कि peak usage had to be established in advance, often leading to over provisioning and wasted resources। मतलब इसमें यूसेज बहुत ज़्यादा पीक में हो रहता है, और इसको एस्टिमेटेड, मतलब इसमें एस्टिमेशन एडवांस, मतलब एडवांस इसमें सेटअप चाहिए रहता है, ऑफन लीडिंग टू ओवर प्रोविजनिंग एंड वेस्टेड रिसोर्सेज। मतलब ऐसा है कि इसमें ओवर प्रोविजनिंग और रिसोर्सेज काफ़ी वेस्ट हो जाते हैं इसकी वजह से। एंड procuring and setting up new servers could take weeks or even months। मतलब ऐसा है कि सेटअप करने में, न्यू सर्वर्स को सेटअप ऑफ न्यू सर्वर्स कैन lead to take weeks or even months। तो इसमें या तो वीक्स लग जाती है या तो मंथ्स लग जाते हैं इसको सेटअप करने में। So guys, this is all for today. Tomorrow we will just talk about the cloud computing part 2, and deep explanation will be provided. So thank you and stay tuned on this thing. Bye.